So the next topic in valvular heart diseases is pulmonary stenosis. So we will discuss about we will discuss introduction, causes, clinical features, investigation and treatment part. So as we discuss, pulmonary valve is present in the opening of pulmonary artery into right ventricle. So it is the condition which is characterized by narrowing of the pulmonary valve. So the main cause is congenital. So pulmonary stenosis is mainly congenital disease, or it may be carcinoid syndrome. Then clinical features. So as we discuss, पल्मोनरी वॉल्व का स्टेनोसिस हो जाता है. सो पल्मोनरी वॉल्व जो है वो नैरो हो जाएगी, जिसके वजह से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में. सो अगर स्टेनोसिस हो रही है तो ब्लड जो है वो प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं होगा, तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी. सो देर विल बी इजेक्शन, सिस्टोलिक मर्मर कैन बी सीन एट द अपर राइट स्टर्नम, अपर लेफ्ट स्टर्नम. देन स्प्लिटिंग ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड. अगर वो वॉल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रही है तो सेकेंड हार्ट साउंड जो है वो एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व के क्लोजर से होता था, तो उसमें स्प्लिट हो जाएगा. देन लाउड हार्श मर्मर ड्यू टू इनऑडिबल पल्मोनरी क्लोजर साउंड. देन इंक्रीज्ड राइट वेंट्रिकुलर हीव. देन इन इन्वेस्टिगेशन, इन ईसीजी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिल सकती है. एंड इन चेस्ट एक्सरे, post aortic dilatation in pulmonary artery can be seen. Then treatment part, percutaneous pulmonary balloon valvuloplasty can be done in severe cases. Then valvotomy can be done. So this is about pulmonary stenosis. Then pulmonary regurgitation is the rare condition in which reverse flow of blood from pulmonary artery to right ventricle due to incomplete closure of pulmonary valve. So these are about valvular heart diseases. So in exam point of view, mitral stenosis and regurgitation and aortic stenosis and regurgitation are more important. Then we will discuss about next cardiovascular disease in next video.